Check, 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 check. Check, 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 check. Check, 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 check. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Check 1, 2. Check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. For breakage, check for the light. If it's green,
Hello. Red out. Point. Red out. Bonus point. Check, 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 check. Can you hear me? Check, 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 check. Can you hear me? Check, 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 check. Check, 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 check. Can you hear me? Check, 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 check. Check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ताबड़तोड़ थर्सडे इवनिंग मैच के लिए तैयार हो जाइए दर्शकों। एक और बड़ा मुकाबला यहाँ पर फैनकोट पर आप सभी के मध्य
मैच नंबर 80 अरावली एरोज वर्सेस मुल्थल मैग्नेट्स। एक और बार बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप सभी तक बयां होगा कबड्डी का जोश, जज्बा और जुनून। और चलिए यहाँ पर जो सफर है वो निश्चित तौर पर बहुत ही अभी तक अनूठा रहा है और इसी प्रकार से हम आगे की तरफ चलते चले जाएंगे युवा कबड्डी सीरीज में। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर दोनों टीम की सर्वप्रथम बात कर लेते हैं किस अंदाज में अभी तक का इनका प्रदर्शन रहा है। अरावली एरोज अंक तालिका पर चौथे पायदान पर मौजूद है। 8 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 1 मुकाबला टाई खेला था हम्पी हीरोज के विरुद्ध। और वहीं पर अगर हम बात करें मुर्थल मैग्नेट्स टॉप ऑफ द टेबल, पेरियार पैंथर्स के हार के बाद मुर्थल मैग्नेट्स पहुंच चुका है पहले पायदान पर। 8 मुकाबले खेले हैं, 7 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला हारा जरूर है महज, परंतु क्या लाजवाब सफर रहा है इन दोनों ही प्रदर्शन का। और चलेंगे जिस प्रकार से अब आगे की तरफ और बात करें एक और बड़ा खेमा। डे नंबर 9 दूसरे राउंड पहला मुकाबला उलटफेर होता हुआ नजर आया। पंचाला प्राइड ने मुकाबला जीता, 10 पॉइंट से हराया पेरियार पैंथर्स को। दूसरा मुकाबला जीता काजीरंगा राइनो से 17 पॉइंट से। और अभी तीसरा मुकाबला अरावली एरोज वर्सेस मुर्थल मैग्नेट्स और आज के दिन का अंतिम होगा टडोबा टाइगर्स वर्सेस हम्पी हीरोज। फुल ऑन एक्शन पैक डे के लिए रेडी हो जाइए, बट अब समय है इस मुकाबले की शुरुआत का। सो लेट्स इनवाइट द टीम नंबर 1 अरावली एरोज। चलिए तो एक कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी इस मुकाबले में। समय है हमारी टीम मुर्थल मैग्नेट्स। और चलिए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का। मैच नंबर 80 की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग 7 से शुरुआत करना चाहेंगे। अरावली एरोज के आज वो कौन स्टार्टिंग 7 हो गए जो मैच पर आपको सर्वप्रथम नजर आएंगे। गोविंद गुजर ऑलराउंडर, कपिल गुजर गंगाराम की कवर्स की जोड़ी, राम कुमार शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सपोर्ट बहुत अच्छे अंदाज से दे रहे हैं जय भगवान को, द भीम ऑफ युवा कबड्डी सीरीज जय भगवान। और कॉर्नर कॉम्बिनेशन में लोकेश गोसलिया और महेंद्र चौधरी, राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर की ये जोड़ी है और कमेंट्री बॉक्स में जोड़ी बना ली जाती है। सो लेट्स इनवाइट नवीन शौरी, स्वागत है आपको कमेंट्री बॉक्स में। Thank you, Harshit. And it has been that kind of a day where the network is trying to play, hide and seek with me. And Mursal Magnus is here, and this is a nice team as Vijay Kumar and Krishan Dul are the regular corners that we opening up, and Umesh Pawar will be there to raid in along with Vinay Virendra and to support Ashim Malik. But the Dul effect of Sanjay and Manish have found form in the recent games, and that is nice to see for the Mursal Magnets. But it is also a happy news that Kaziranga Rhinos have won that previous game with 17 points. That's it. All thanks to your voice, is it? तो चलिए नवीन आप बोलते रहिए। देखिए फैन कोड पर हमारे सभी दर्शक आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रहे थे और मैं भी काफी समय से आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा था नवीन। Very sweet of you, brother. Very sweet of you. Really nice that we are back on the 60th game. There is a lot of rains around, and the network was playing the hide and seek, as I said. But no hide and seek in front of this guy, because this is the beam of all the raiders. 150 raid points in 195 raids, and the strike rate slightly improving from what he started off the Yuva Kabaddi Series. 76.92 is a good one, but his anti-blocks, the defenders have to watch out for. Yes, for sure. और ये है वो जय भगवान। और देखिए भगवान को किस तरह से याद कर रहे हैं। और चलिए अगर साथ ही साथ बात करें इस खिलाड़ी की, आशु मलिक 191 रेड में 155 रेड पॉइंट्स है, 9 सुपर 10 है, 81.15। नवीन इसकी तरफ आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा। ये रेड स्ट्राइक रेट सच में बहुत ही इंप्रेसिव है। It is good that he is not raiding too much, because Umesh Pawar and Vinay Virendra are sharing that load, Harshit. So that is nice to see, where he is not raiding as he was in the survival round. And that is nice to see where the responsibility is being shared, and the toss has been won by the Murthal Magnets. Kapil Gurjar will not get the coin this time.
Look at him. Look at him actually feel like a small baby where he's lost his ice cream. You know, the way he was actually going for the coin, and then when he said that, okay, it is, Manish Dul who will be taking the coin, I love the reaction that the way he put up. But talking about Murthal Magnets, of course, 13 wins is a big feat achieved by them, and just 2 losses. And I'm really happy that Ashu Malik's responsibility has been shared by Umesh Pawar and Vinay Virendra. Very, very important. He's got 2 support traders, and that trading trio looks good. Aravalli arrows for you, Harshit. देखिए इन्होंने भी 17 मुकाबले खेले, 9 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे जरूर हैं, परंतु जय भगवान का इस प्रकार से फॉर्म में आना, राम कुमार का अच्छा सपोर्ट करना, कपिल गुर्जर, गोविंद गुर्जर पर आज बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन को आगे की तरफ निर्भर कर पाएंगे, और वॉलंटियर्स शुरुआत में सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी के पास भी कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज न रहे. Exactly, and we will go into that extra advantage of having a wonderful graphics of the countdown now. And the last time these 2 teams met, that it was a very, very easy win for the Murthal Magnets, and Aravalli Arrows were really struggling, who have been placed 4th on this point table, but the top placed Murthal Magnets will probably be top, I mean to say, not just the top there. Of course, Periyar Panthers are there, but just below them. And Ram Kaur starts off the raid in a fashion where he is always nice, cool and calm, then goes and attacks. But somewhere, Harshit, Aravalli Arrows should start with a bang, because they know that it is for them, this match is more important than the Murthal Magnets. You can't just have feelers, you can't just have those warm-ups in the raid. You will have to be warmed up the way when you run inside the match, as now Umesh Pawar comes in from the right flank. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा नवीन आपने, जिस तरह से बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा अरावली एरोज के लिए की एक अच्छी आक्रामक शुरुआत मुरथल मैग्नेट्स के विरुद्ध, और लीजिए आक्रामकता की आपने बात की थी नवीन, और इस बार कॉम्बिनेशन अरावली एरोज के लिए, क्या गोविंद गुर्जर, कपिल गुर्जर मौजूद थे या फिर गंगाराम और कपिल गुर्जर, ये देखना होगा. In fact, the corners came in there. Mahendra Chaudhary along with the chain from the right in position, and it was nice to see Mahendra Chaudhary also chipping in with a lot of tackle points. And now the beam of the Raiders, Arshit, it's Jai Bhagwan, and I am happy that he is also going in for the kick and takes out the captain of Murthal Magnets, Sanjay Dul. In fact, there was Manish Dul going out and Sanjay Dul just escaping that kick. Look at that. See, it was actually targeted at Sanjay Dul for the hand touch, and then when Jai Bhagwan saw him go back very quickly, he used his legs for the kick. Oh, what a innovation done by him. और यही होता है ना कि चारों तरफ आपकी जिस तरह से नजरें घूमती है, और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिस प्रकार से हमेशा कबड्डी के मैच पर जय भगवान उसका बहुत अच्छा उपयोग करते हैं नवीन, जिस तरह से आप कमेंट्री करते हुए करते हैं, परंतु इस बार आशु मलिक का ये है शानदार and the escape was really nice, but I will say the hand touch was ineffective. And then what happened? Lokesh Gosalia came in and gave away the rabdi to Ashu Malik. Is rabdi famous in Jaipur? Yes, very much. नवीन आप आइए तो सही, आपको रबड़ी और बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही है. Yeah, actually that's what Lokesh Gosalia awarded Ashu Malik with, because the running hand touch was ineffective. He did not get his man in the right in position. But Ramkuvar again takes off another point, and that time he's targeted Vinay Virendra. The support raider is out of the equation. Why was he in the covers? Come on! And once again, it is Sanjay Dul who should be really, I'm not saying acquainted of or complained of, but he should have saved the raider. बिल्कुल सही कहा नवीन आपने, विनय वीरेंद्र को वहां पर कॉर्नर पर कवर की पोजीशन में मौजूद थे, परंतु नवीन एक बार फिर से क्या बहुत अच्छा डिफेंस है, बहुत अच्छा मार्वेलस. प्लस कवर का कॉम्बिनेशन अरावली एरोज, जिस आक्रामकता की हमने बात की थी नवीन, वो आक्रामकता नजर आ रही है, और महेंद्र चौधरी का ये ब्लॉक था, शानदार ब्लॉक. Yeah, let me tell you something. They have watched Ashu Malik raid, I think, with a lot of video footage that is available, with all the technologies and with all the
comfort of sitting and watching it in the hotel rooms. That is really nice because they worked on him very nicely because the outward turn was brilliant by Ashu Malik. And what happened was Lokesh Gosalia went for the legs. And when Mahendra Chaudhary went for the body, the upper body, Lokesh Gosalia went for the legs. And that is why Ashu Malik's even the proper outward turn towards the lobby and midline was so very ineffective. They have read him. They have read him, no doubt about it. जी हाँ, बिल्कुल सही बारीकियत के साथ आपने नवीन समझाया। और चलिए, जो मैं बात कर रहा था आपके जयपुर आने की नवीन, तो उसके बारे में आपने आगे उत्तर नहीं दिया कि कब आ रहे हैं आप जयपुर। हमें सबको पता है कि आपका बिजी स्केड्यूल रहता है नवीन, देखिए, परंतु देखिए पैसे के साथ साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी जरूरी है नवीन। घुमाने आइए अरे पैसे हमेशा मतलब आएंगे जाएंगे, लेकिन वो जो अनुभव जो है that is something else, and I really will love to be there for more than 10-15 days as Mahendra Chaudhary wanted to go out for a holiday on the bench for a while. I am just waiting when will I make my holiday to Jaipur because I understand that it's a fantastic place, a lot of kilas, lot of forts to be seen, and I've just been to Jaipur. I really want to go to places like Udaipur. I want to go to places where we share the border with other nations. I just want to be there and look out that. I've seen a lot of Jaipur, but I want to see the other districts in Rajasthan, Harshit. जी हाँ, बिल्कुल आइए, आप जैसलमेर के रण दिखाएंगे आपको उदयपुर के झीलों की नगरी झील में नहलाएंगे भी आपको। I want to see the run of Kutch. I haven't seen it in reality. I want to see the white desert. I really want to see that because it's all been in the movies or in the songs that we have seen them. चलिए, राम कुमार आने वाली, क्योंकि राम कुमार जुआ डायरेक्ट पर आ चुके हैं, निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। कॉर्नर्स आज विजय कुमार और वहां पर एक और खिलाड़ी कृष्णदुल की अगर हम बात करें तो देखना होगा किस प्रकार से वो अपने लिए शुरू करते नजर आएंगे। मुकाबला राम कुमार एक बार फिर से लेफ्ट टू राइट बहुत तेजी के साथ। And I'm really happy with the Murthal Magnets defense who haven't faltered. That was not required. Your left corner defender is under Ram Kumar's leg, and why do you have to topple him over him? Look at that. Oh my God. That was a strong blow on Vijay Kumar from left corner. The attack was completed, the tackle was successful, and then you make Ram Kumar, who is not very light, just fall on Vijay Kumar's neck. Hope he's not got any attacks. Oh, the jump was right. So look at this. And the jump, and Vinay Virender surrendered himself. He should have just gone by. But the defense of three who went in for the push did not have any work. The jump was good. Vinay Virender just stood there. Oh. All the three guys went in with a slide without getting any prize. Yes. और उसमें शायद गंगाराम को हल्की सी वहाँ पर चोट भी नजर आई। ऐसा लगा कि वो जरूर फेशियल एक्सप्रेशन से वहाँ पर नजर आया कि डाइव लगाई जब हल्का सा शायद उनका घुटना क्या ट्विस्ट हुआ था, हल्का सा वहाँ पर जरूर अपने नी को पकड़ कर बैठे जरूर थे। और जय भगवान बैक किक लगाने की कोशिश, वो स्पीड आप देखना चाहते हैं जय भगवान में जिस प्रकार से किक लगाते हुए नजर आए। 5-3 का स्कोर है। और आज जिस पॉजिटिव एटीट्यूड की मैं बात कर रहा था नवीन, आपने हालांकि शुरू की थी कि अरावली एरोज को अगर मुकाबला जीतना है तो मुरथल मैग्नेट्स की विरुद्ध शुरुआत से ही वो प्रेशर बनाना होगा मुरथल मैग्नेट्स पे। और क्या अभी तक आप खुश नजर आए नवीन अरावली एरोज के प्रदर्शन से अभी तक? I'm happy with the defense. I'm really happy with the defense. Of course, Jay Bhagwan will do his work, and they haven't let the Raiders take away too many points. Apart from Kapil Gujjar, he's the captain. I have huge respect for his kabaddi skills, but somewhere he becomes a target for especially right raiders like Umesh Pawar, and he's not that big a threat when Vinay Virender is raiding because he's a left raider, and Gangaram and Govind Gujjar takes care of the left raiders. But when the right raiders come in, he somewhere becomes the weak link. I should not be saying weak link, but somewhere he becomes the target of the right raiders. Why? It's not because of the raiders' speed. It's because of Kapil Gujjar, who does not go back in time. And this time, Jai Bhagwan does not go back in time. He's been pushed off the spot into the advertising hoarding. What a strong dash that was by Manish Dhul. The captain sending out a message to Bhim and saying, okay, if you want to anti-block us, we will dash you so fiercely that the advertising hoardings will also be disturbed. क्या स्ट्रेंथ थी नवीन, क्या स्ट्रेंथ थी। मैं तो शायद बहुत चक्का सा वहां पर रह गया था कि जिस तरह का वहां पर डैश किया गया। जय भगवान भी शायद सोच रहे थे कि क्या बात है,
शायद ही मैंने कभी ऐसा डैश खाया हो, बट बहुत ही पावरफुल डैश। और ऐसा डैश आपको कहाँ देखने को मिलेगा युवा कबड्डी सीरीज के अलावा, जो जोश जज्बा और जुनून यहाँ पर लेकर आ रहा है सभी युवा खिलाड़ियों के लिए। और एक और दिलचस्पी के साथ बात करना चाहूंगा नवीन, कि अगर बूस्टर राउंड में मैं आशु मलिक और उमेश पवार के पॉइंट्स की तुलना करूं ना, तो बहुत ज्यादा अंतर मुझे लगता नहीं कि वहां पर होगा। उमेश पवार ने क्या बखूबी सिर्फ साथ नहीं दिया है, बल्कि लीड भी किया है कभी कभार। No, very much. See, that is why I said the strike rate, the raid strike rate of Ashu Malik is good, because he's not going in and raiding too many times, as Manishul has been warned. When the raider is raiding, no talking, no shouting, only one person can talk. So yeah, that's the verbal warning that has been really put across by both the end referees. But yeah, Ashu Malik is raiding now. So when he is coming into raid, why his raid strike rate has improved is because he's not put in too many raids. Because in the survival round, we saw that he was going in, raiding every alternate raids, or rather every consecutive raids he was there, because there was nobody. And Umesh Pawar has taken off that pressure. And now the ankle hold comes in, but the dangling hand also taken care of. Right, this is somewhere touch and go for the Aravalli Arrows. But as I said, I'm really impressed with the defense, the way that they have performed today. और बहुत अच्छी ग्रिप वहां पर नजर आई लोकेश गोसलिया एक बार फिर से। काफी अच्छा लगता है जब इस प्रकार से लोकेश गोसलिया फायरिंग शुरुआत करते हैं, और इस बार बेहतरीन वहां पर टैकल करते हुए नजर आए गंगाराम। ये आपको बड़े पसंद है गंगाराम जिस प्रकार से, इसलिए पसंद है देखिए, क्योंकि जिस तरह से जाते हैं, कद जरूर छोटा है परंतु बहुत क्या थोड़े से एकदम मतलब बेहतरीन नजर आते हैं, थोड़े से क्यूट टाइप नजर आते हैं जब रेड पर जाते हैं नवीन। Yeah, absolutely. See, he knows his limitations. Right? He does not overstretch himself. He does not burn up the extra energies that he's got in just going in too deep and kicking the defenders. You don't see him kicking a lot because he understands what his height is. And then Umesh Pawar now tries to unsettle the defense but has to go back empty-handed. So I like the way Gangaram raids, because he raids in his limitations, and he knows that he should not be trying too many things which does not support his height. But Ram Kuwar somewhere should have to understand that he's got a good height. He can go in for that running hand touch very swiftly, where he does not do that. See, just one or two steps and then tries in for that diving hand touch on the towers and then gives it up. I haven't seen him charge towards the right flank, and that is what he will really need to get into his armory, because you do not have a lead raider apart from Jai Bhagwan. Yes, I understand Gangaram is doing your work, but if Ram Kuwar also fires, imagine that point. Imagine the way where Aravalli Arrows will be finding themselves in, as Murthal Magnets have Vinay Virender and Umesh Pawar both supporting Ashu Malik now. जी हाँ, बिल्कुल सही और बिल्कुल पते की बात जिसे आप कहते हैं ना कि वहाँ पर वो बात करते हुए नजर आए, क्योंकि राम कुमार में वो काबिलियत है, वो काबिलियत हमें नजर आती है राम कुमार की, वो आसानी से प्रति मुकाबले सुपर 10 स्कोर कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने पिछले कुछ मुकाबलों में सुपर 10 लगाए हैं, परंतु जिस तरह से वो चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज यहाँ पर उमेश पवार करते हुए नजर आएंगे। राइट हैंड के साथ शुरुआत करेंगे लोकेश गोसलिया पर, नजरें होंगी सबकी लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर पर महेंद्र चौधरी मौजूद है, दो अच्छे कॉर्नर राम कुमार इनमें, गंगाराम का गोविंद गुर्जर एक अच्छा डिफेंस गेमा है, कौन जाएगा चेक के लिए, महेंद्र चौधरी का डबल ट्राई होल नवीन। Nice, really nice, because Mahendra Chaudhary did not go back too much. He just faked Umesh Pawar into that. He just faked as if he was going behind and then stood his ground. And in a do-or-die raid, every time it's the raider who is under pressure, as now is Ram Kuwar. And look at that. He does not charge the right flank, and Krishnan Dul has to just put one step behind, that's all. Because he will not come in for the dive, but come on, Vijay Kumar. It was the raider who had to take all the pressure. It was so very evident. You did not have to do that. See there. Why do you have to go there? Because he is not going in for the ankle hold. Your counterpart, that is the right corner, Krishnan Dul, will not go in for an ankle hold when it is not there. And then the left corner should have gone in only with the dash, with the ankle hold coming in. If not, that's what happens. और इसी के चलते राम कुमार को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला वहां पर डू और डाई रेड में, और राम कुमार की हम लगातार चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे। परंतु पिछले मुकाबले में उन्होंने सुपर 10 जरूर प्राप्त किया था मुरथल मैग्नेट्स के विरुद्ध जब खेले थे, तो इन्हें डिफेंस पसंद है इस प्रकार का।
अच्छा वहां पर सुपर 10 लगाया था। हालांकि सॉलिड डिफेंस है मुर्तल मैग्नेट्स का, बहुत अच्छा लीथल कॉम्बिनेशन आपको नजर आता है। चाहे हम संजय धुल, मनीष धुल की जोड़ी की बात करें, कृष्ण धुल और विजय की जोड़ी की बात करें, और राम कुमार के बारे में, जी हाँ, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करते, फुटवर्क अच्छा है, इसीलिए हम इनकी काबिलियत की बात करें कि अगर ये अपनी आर्मरी में इसे भी जोड़ेंगे तो ये भी जय भगवान, आशीष नरवाल, प्रतीक दहिया जैसे रेडर बन सकते हैं। नवीन, See, he's got age on his side. Okay, you will have to develop these skills right away, and then see. I can see him stretch out his back. I guess he's carrying a little bit of a niggle as well. I understand it's a big round, it's a big series, Yuva Kabaddi Series. But yeah, that's the beauty of it. You'll have to be fit every single time. As Vinay Virender goes in, hand touches, kicks, nothing there for the left raiderette, and Govind Gurjar will rush in with a pursuit and come back with an empty raid. They're playing on that do or die raid now because Aravalli Arrows are having that 4-point lead and also have a full house. And now action packed. And now this is going to be a big action block, even when Vinay Virender can look really not so nervous. And look what has happened. Wow! Mahendra Chaudhary did not understand that the scorpion kick, even a half scorpion kick, can be so lethal. Look at that! What was he trying to do? And then Govind Gurjar, he just came in and another point was awarded for Vinay Virender. Of course, Mahendra Chaudhary did not understand what happened, but Govind Gurjar could have held back himself. Now Ram Kuwar in a do-or-die raid. और नवीन, उसमें मैंने देखा कि रिवर्स लेग से जो लेग उन्होंने एंकल के लिए डाला था, उसके बाद रिवर्स लेग से स्कॉर्पियन किक लगाई थी, परंतु इस बार राम कुमार को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा। उन्हें किसी और चीज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सिर्फ अपने आप को वहां पर टर्न किया पीठ के भरोसे आसानी के साथ, और उसके बाद मिड लाइन को क्रॉस करके 3 पॉइंट की लीड को मशक्कत कराया कि चलिए 3 पॉइंट लीड यहाँ पर बनी रहे। Back hold, not effective. Lokesh Gosalia has to go back. Idea was right. I will not say there's no bonus. Yeah, that's a good sign by the referee where the leading foot was not in the air and trailing foot just not crossing the bonus line. Lokesh Gosalia was, I don't know what appealing for, but the idea was right by him because Ashu Malik was blinded, but the pace somewhere took him away. But just going back to that Ram Kuwar raid, and now Jai Bhagwan gets a point, and Vijay Kumar has to go back. Just going back to that do-or-die raid, Harshit, in where Ram Kuwar actually got a very, very good escape route. What I've seen in Yuva Kabaddi Series is all the raiders, they've also given us this wonderful technique. If the defender is not too very low in the stands and for the block or for the dash, they easily just hold the neck of the defender. I'm not saying hold it, they just block it. The block of the neck and the chest happens from the raider, and the outward turn happens towards the lobby, and the midfield is being easily reached. So what the defender should do is should definitely stay low, and Vinay Virender gets a running hand touch on the left corner. जी हाँ, बिल्कुल सही वहां पर आपने बताया नवीन कि जिस तरह से, और देखिए थोड़ा सा रेडर को अक्सर हमने देखा, जैसे राम कुमार ने भी थोड़ा सा स्क्वाड टाइप, थोड़ा सा पर अपनी नीज को बेंड किया था वहां पर, और लो रहने का उन्होंने बिल्कुल प्रयास किया। तो बिल्कुल सही बताया कि डिफेंडर जितना ज्यादा अगर इस प्रकार के ब्लॉक में लो रहेंगे, उतना ज्यादा उन्हें टैकल करने में ज्यादा मदद मिलेगी, उतना वो बल डाल पाएंगे, उतना ही वो रोक पाएंगे और टर्न को थोड़ा कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे। Yeah, and especially in that ankle hold and the dashes. See, block, I understand. Yeah, see, this is what I was saying. Oh, but still Ashu Malik's brilliance takes more than 1 point. It's a multi-point raid. How many? Yeah, up to time out, correct. They will be searching, they will be counting for men. But let us go back to that escaping skills. And what a way to escape. Look at that. The anti was not given. He tried the dupki, but then all of them came in. I think it's a super raid. It is going to be that. Oh my God, it's a 4-point raid. And look at what has happened. This is last man standing now for the Aravalli Arrows. 4-point रेड। नवीन देखिए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। देखिए वो सुपर रेड जब तक सुपर रेड लगती नहीं, जब तक आप अपने शब्दों में से बयान न करें। पिछले मुकाबले में भी एक 6 पॉइंट रेड थी जहां पर मनु ने लगाई थी, परंतु उसमें थोड़ा फीका फीका लग रहा था, वो तड़का नजर नहीं आया था, क्योंकि आप एक नया तड़का लगा देते हैं। और जिस तरह से आपने बताया, और आशु मलिक की हम लगातार चर्चा कर रहे थे नवीन, क्या शानदार एस्केप करते हैं। सिर्फ एक डिफेंडर से नहीं, वहां पर 4 डिफेंडर्स को शिकार बनाया। गंगाराम इकलौते अब खिलाड़ी रह जाएंगे अरावली एरोज के लिए, और जिन्हें भी डैश कर दिया जाएगा, यानी कि अरावली एरोज इस मुकाबले में पहली दफे ऑल आउट हो जाएंगे। Just before that 4-point raid, Harshit, it was Aravalli Arrows who were leading, and
this is what I meant to say. When you are low and going for the dash and very strongly going in as the cover defender, and very well executed by Manish Dhul on the dash. Yes, of course, Gangaram is not that a tall raider, but still you had to reach out for him and he's got it. And Vinay Virendra tried a half jump, then again turned towards the inner circle, inward turn, and then goes back. But Lokesh Gosalia once again found wanting. You've just come in the all-in situation, and Aravalli Arrows are somewhere slipping this with the defense. And I feel for Jai Bhagwan. I really feel for him. Yeah, I understand that he's been that beam of a raider, but the beam also wants his battalion to save whatever he gets. जी हाँ बिल्कुल, उनके छोटे Ah! शेर की आवश्यकता होती है, परंतु लीजिए आप, ये भीम है, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा वाले भीम है। क्या बात है, क्या बात है, जिस तरह से डुबकी लगाई, टर्न किया, डंबल किया। नवीन आपसे जानते हैं और कितनी खूबसूरती से आप इस रेड को बयां करेंगे। I will tell that only 2 points for that raid is very, very unlucky. It is cruel to just give only 2 points. Hashim Malik slips and does not get a. Yeah, that's what he says. That's what he says to the referee. There is some wetness, there is some sweat that is there, and that's the reason. Look at that. He slips on the turn. Oh, that's a big slide. It's not even a slip, it's a big slide into the lap of Mahendra Chaudhary. But yeah, just coming back to Jai Bhagwan's raid. Only 2 points is cruelty here, because it was such a good skill. It was a turning dupki, because when Krishan Dhul came in for the charge, Ashu Malik was ready for the dupki, and then the cover defender also did not have a chance to get in the ankles of Jai Bhagwan, because he was going so swiftly towards the midline. And a turning dupki, can you just imagine the new skills that has been exhibited by these raiders, the Yuva young Kabaddi talents, and we are so happy and lucky to be having such talents show their skills in front of us. Once again, Vinay Virendra. जी हाँ, इस बार देखना होगा विनय वीरेंद्र, जरूर यहाँ पर थोड़ा सा समय लेगी टीम, और जिस तरह से आपने बात की यहाँ पर लगातार विनय वीरेंद्र की। चलिए इस रेड की बात कर लेते हैं पहले। See, when you are not low, Harshit, that's what happens. When you are not low, that's what happened. Govind Gurjar was not low. See, that's why 2 points for Vinay Virendra. What did the raider do? Did you just notice? It's a wonderful camera work and brilliant EVS technology that we have on the replay. Look at that. If he's not low, you have no chance in pushing the raider outside the lobby. And the raider has all the time in the world to just make sure he turns you across like turning a page of the book. He just turns you across like a page of the book towards the lobby and goes towards the midline. That is why the cover defenders need to be very low in pushing it out, so that you target the lower body or the legs of the raider, and the balance is being taken off. And Jai Bhagwan is putting his last raid of the first half, and he gets the bonus. So only 2 point lead now for the Murthal Magnets after the first half, and I will say Aravalli Arrows have come back really nicely, and I like what the referee says. The Murthal Magnets are actually appealing. Oh, bonus nahi tha, Sabji. And the referee says, nahi, clear hai, aap chalo break le lo abhi. अभी का बोनस नहीं जी हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ पर बोनस की यहाँ पर वार्तालाप जरूर कर रहे थे, परंतु चलिए ये हमारे सभी दर्शकों के लिए बोनस है कि आपने अगर किसी भी समय अगर मुकाबले को नहीं देख पाए ना फर्स्ट हाफ के दौरान, तो आपके लिए फुल पैक हाइलाइट्स है यहाँ पर फर्स्ट हाफ की, टॉस से लेकर अंतिम रेड तक। वहाँ पर हाइलाइट्स यहाँ पर जरूर टॉस जीता, यहाँ पर मुर्तल मैग्नेट्स ने कोर्ट का यहाँ पर फैसला किया। एंड अगर नहीं देख पाएंगे is not the word at all, Harshit, because Kabaddi, I'm sure all our Kabaddi super fans will always be glued towards the fan code, and then making sure they're watching this all the way throughout everywhere, no matter wherever they are in the world. But yeah, that's what Kabaddi is. It does not allow you to, take away your eyes. And this was the dash that Jai Bhagwan would have felt. Okay, chalo मैं अगले रेड पे दिखाता हूँ मेरा पावर क्या है. And but then something to say that he got his own medicine from Manish Dhul. But it has been a swinging pendulum of points, because Aravalli Arrows came back very nicely at one stage. But then it was Ashu Malik's 4-point raid. Yeah, this was it. This was the turning point of the first half, where the all-out was inflicted, and then the Murthal Magnets
have had a little hand. Just a couple of points, just a 2-point lead, but the momentum once again equally balanced. I will not say whose momentum or whose nose is in the front, but it is equally balanced, and we have a very, very exciting second half coming up in a short while. 17-19 19-17 का यहाँ पर स्कोर है। जिस तरह से यहाँ पर हमारे साथी कमेंटेटर ने बताया, अरावली एरोज की बात कर रहे थे, टैकल पॉइंट्स अभी भी ज्यादा हैं। मुरथल मैग्नेट्स के पास 3 है, डबल वहां पर अरावली एरोज के पास टैकल पॉइंट्स है, 2 ऑल आउट पॉइंट्स है। और चलिए नवीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद सेकंड हाफ में हम मिलते हैं बहुत ही जल्द कमेंट्री बॉक्स में और फैन कोर्ट पर। तो ताबड़तोड़ थर्सडे में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैच नंबर 18 पे हम यहाँ पर हमारे सफर पहुंच चुका है, पता ही नहीं लगा। देखिए पता ही नहीं चल रहा है कब यहाँ पर असलीवा मुकाबला यहाँ पर मौजूद है युवा कबड्डी सीरीज का। ये है कबड्डी का जोश, जज्बा और जुनून, जो एनर्जी नजर आती है। जी हाँ, बिल्कुल नवीन ने सही कहा था कि कबड्डी के जो प्रेमी हैं वो बिल्कुल, नवीन शायद यहाँ पर अलार्म 5:30 में लग जाता होगा कि भैया 6 बजे मुकाबला चालू होने वाला है, तो आप प्लीज जल्दी से अपने फोन पर, अपनी टीवी स्क्रीन पर रेडी हो जाएं। Yeah, absolutely, and also there is a lot of notifications that will be coming in from FanCode as well. So that is nice to see. And then we have started this match in a note in the second half that both the teams can win this from here on in, because the momentum is balanced between both the teams, and it is nice to see in the booster round that we have started the second leg of the booster round in the double round robin, and also one more very encouraging factor, and then I should also be saying appreciable thing that has been done by our Yuva Kabaddi Series think tank is whoever's finishing this booster round in the top 3. Of course, there is a lot of prize money to be won after this round. There is challenger round and summit round that will be coming up later in the coming weeks, but whoever's finishing on the top 3 will also be awarded cash prize. Now that is what I call Sone Pe Suhaga, because these lads have shown a lot of talent. These lads have given us a lot of entertainment, and why not reciprocate with a nice return gift. यस नवीन, और रिटर्न गिफ्ट की आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा आपने कुछ दिन पहले कमेंटेटर्स के बारे में भी चर्चा की थी। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएं, परंतु वीरेंद्र चाहते कीजिए नहीं, वो चर्चा रहने दीजिए, आप मेरे बारे में चर्चा कीजिए। या हमारी चर्चा तो मतलब होती रहती है, लेकिन विनय वीरेंद्र, what a turn, what a swift turn that was. Look at that, once again, shocking, and Mahendra Chaudhary knows it. He really should have expected that Vinay Virender is good in that swift turn that he puts in. Not so easy, especially for a left raider to go in and try and attack the right flank and then immediately break up his run and then come back for that shocking hand touch which he got on Mahendra Chaudhary. And he was really unhappy with that. Oh, the anti-block was towards the lobby. Come on, it should have been towards the midline. If that was the case, then the block would have been ineffective. The block was really nicely put up, and that time it was the left-in defender along with Lokesh Gosalia. जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ पर आपने सही कहा कि जिस तरह से वहाँ पर जो रेडर्स हैं भगवान थे, उनका वो जरूर थोड़ा सा लॉबी की दिशा में वहाँ पर वो डुबकी या फिर आप ब्लॉक को तोड़ना चाहते थे, मिड लाइन की तरफ होता तो शायद वहाँ पर मशक्कत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती डिफेंडर्स को। इस बार मशक्कत आशु मलिक को बिल्कुल ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। गंगाराम इकलौते आए थे वहाँ पर ब्लॉक और शायद डैश करने के प्रयास से, और आशु मलिक ने कहा कि चलिए इस बार फिर से आपको ऑल आउट की दहलीज पर धकेल दिया जाएगा रावली एरोज। ये जरूर एक चिंताजनक विषय, परंतु राम कुमार चाहेंगे जो 5 पॉइंट की लीड है और ऑल आउट की दहलीज पर वो खड़े हैं, उसे यहां से वापसी कराएं। अग्रेशन देखना चाहेंगे, बोनस से संतुष्ट निश्चित तौर पर नहीं होना चाहेंगे। See, Gangaram again, when he goes to raid, he knows his limitations. But when he is in the defense, he should understand his limitations on the height. But I will just go back to that as Ashim Malik comes in with a super tackle on Ram Kumar. Come on, man! What were you waiting for? Oh, that was easily given away, and another all out on Aravalli Arrows.
Oh, that is not what he wanted. The ankle hold was strong. Look at that. It was a very strong ankle hold. Ram Kumar was waiting. If he could have immediately come in near the back line, it would have been a really good tackle. And that is what even Gangaram was suggesting from behind the bench. Yeah, and just talking about Gangaram, you saw the dash that he put in when Ashu Malik was raiding just before that last raid when the all-out was given. What Gangaram did, he went in and attacked the top half of the body. No, that's not what the dash has to be done. You have to go in and attack the legs of the raider, the waist of the raider, and that is how the balance will be lost. But here, I'm sure, Krishan Dul did not lose his balance, but he lost the point. जी हाँ, जय भगवान को वहाँ पर एंकल होल्ड करने का प्रयास किया था। और बिल्कुल सही आपने बताया कि जब आप डैश या फिर ब्लॉक करने वहाँ पर जाते हैं तो आपको हाइट का और साथ ही साथ गंगाराम ने वहाँ पर अपर बॉडी को वहाँ पर ब्लॉक या फिर डैश करने का प्रयास किया। जितना वो ज़्यादा नीचे होगा उतना ही वहाँ पर सक्सेसफुल रहने के ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। परंतु लोकेश गुजसलिया जैसे ऑल आउट होकर ऑल इन होते हैं वो गलती कर देते हैं। विनय वीरेंद्र को लगातार दूसरी बार यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। ऑल इन होकर आए, एक बार फिर से सेम रिपीटेशन वहाँ पर मिस्टेक नजर आई। देखिए पिछली बार भी कुछ इसी प्रकार का ब्लॉक डबल थाई होल्ड करना चाहते थे परंतु दोनों ही वहां पर सही एग्जीक्यूट नहीं हो पाए नवीन। और ये आपको समझना होगा अरावली एरोज कि अगर आपका मुकाबला जीतना है, आपके लिए महत्वपूर्ण मुकाबला है, तो आपको इस तरह की गलतियां नहीं दोहरानी है। Yeah, see what happens is of pressure on Jay Bhagwan. When your defense is not getting you points, it invariably puts a lot of pressure on Jay Bhagwan and Ram Kuwar. And what a chain tackle that was from Krishan Dhul in the right corner, coming in with the chain. Yeah, you wanted two people to stop the beam and they have done it well. But today I haven't seen that anti-block push or the anti-block bulldozing effect that is coming in from Jay Bhagwan because he's not got the angle to do it. He's not got the defender right in front of me. And also all marks. Oh, jump was nice, even if the ankle was held very tightly. Umesh Pawar says, "नहीं, मेरे शू को छोड़िए, मैं थोड़ा लेस बांध लूँगा." And he does that very, very nicely. Mahesh, in fact, Mahendra Chaudhary there once again. He's been very nice in doing such tackles, in attempting such ones when the raider is jumping over him. He's caught them like he's catching a football over his head. But this time, Umesh Pawar was really up to the task. But this time एक बार फिर से राम कुमार, देखिए कितना हाईलाइट डिफेंस के हो, देखिए आपने, ये देखिए आप, ये है युवा भारत के सितारे। देखिए आप जिस अंदाज में वहां पर मुंह खोल के हंसने का वहां पर देखिए, ये है वो शॉकिंग जिस तरह का डिफेंस यहाँ पर प्रदर्शन था। नवीन, किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे अपनी भाषा में कि हमारे युवा खिलाड़ी, युवा जो लोग हैं वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं कबड्डी के इस गेम को। I'm happy that Sanjay Dhul got that block very, very correctly on Ram Kuwar, or else it would have been curtains if Ram Kuwar's hand wouldn't have been taken care of. And Ashu Malik once again gets that one single point in the super tackle situation, and it is Kapil Gurjar. Come on, this is the problem here with Aravalli Arrows. If they play well, the defense really does well. If they don't, the arrows looks like they are all blunted and they have no sharpness. But I'm liking the sharpness of the young lads, young superstars, as you said, who have been sitting there and watching the Kabaddi game. Strong ankle hold. Gangaram, thank you so much. Tata Babai on the bench. But just behind the referees. Look at that. Just behind the referees. I'm happy that they have let out that video games, that it has been so addictive, and not sitting in front of some PlayStation or something. No video games. Coming in and looking the original excitement, as once again there is an all-out for the Murthal magnet that has been inflicted on Aravalli Arrows. So 35-19 सेकेंड हाफ में यहाँ पर दूसरी दफे यहाँ पर ऑल आउट करते हुए नजर आया है अरावली एरोज को। यहाँ पर मुर्तल मैग्नेट्स का खेमा निश्चित तौर पर अब यहाँ पर दोनों ही कोचेज और खासकर देखिए दिलबाग सिंह किस तरह से समझा रहे हैं, भाइयों थाकन लीड आ चुकी है, अब कोई गलती मत कीजिए अठाऊं। बड़ी आवश्यक बात है आप। Definitely, and it is very important for Aravalli Arrows. Still there is a lot of time. And Dilbag Singh knows that, because if Murthal Magnets somewhere make a mistake, especially against Jay Bhagwan, who is so good in the second half we have seen, but if he strikes and with the brute force, 12.5 minutes and this lead will be wiped out. I want to see more of Jay Bhagwan going in with a brutal force raid, and I want Ram Kuwar to increase his speed.
only then you will get some touch points, or else no. That is very difficult with such pace. With just 1 or 2 foot steps, you'll have to go back empty-handed. That's all it is. It is in the beginning of the raid itself, Arshit. You clearly get to know if the raider is getting it or no, and it is so evident. And if we can guess it and judge it, imagine the players just seeing him live in the defenders. They will really know that हाँ चलो ठीक है, ये बस इतना ही करेगा, फुटवर्क दिखाएगा और वापस चला जाएगा. जी हाँ, बिल्कुल सही बात यहाँ पर नवीन आपने की है. और गोविंद गुर्जर एक बार फिर से वही जिस प्रकार से हम लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे, इस बार वही वहां पर डैश करने का प्रयास किया. थोड़ा सा लोग क्या इस बार रहना चाहते थे, रिप्ले में देखेंगे, परंतु बोनस +1 पॉइंट ये देखिएगा. गोविंद गुर्जर एक बार फिर से थोड़ा सा अपर बॉडी को वहां पर नजर आया. हालांकि मोमेंटम जो वहां पर रेडर के पास था मिड लाइन की तरफ था और थोड़ा झुके हुए भी जरूर थे, परंतु उसके बावजूद यहाँ पर अपर बॉडी की तरफ वहां पर गए थे. और अब जय भगवान, जिस प्रकार से आप देखना चाहते हैं इनसे ब्रूटल फोर्स की कुछ रेड्स जो तहलका मचा पाए डिफेंस में, अब देखना होगा जय भगवान क्या वो अपना सुनिश्चित कर पाएंगे. एक टच पॉइंट नंबर 10 पॉइंट अरावली एरोस करेंगे. It is nice. See, Jay Bhagwan does his work. It's not a problem for me with Jay Bhagwan. And look at this. Easily done, and Murthal Magnet's captain did not understand what was Bhim doing there. And that's why Manish will have to go back. Now, my issue with the cover is, see, you should also be seeing at 2 hands, but Jay Bhagwan says, okay guys, the defense is making a lot of mistakes. Let me also do some defense work for you and put that surprise tie hold. And look at that, the block, the anti-block and push that I always keep talking about on Vinay Virender, and pushes him outside the end line. Yeah, so I was just talking about those cover defenders, especially Govind Gurjar and Kapil Gurjar. See, I understand you need to be low, you need to go. Yeah, that's basic, Harshit. As you mentioned, it's very right. But you should also have two eyes, one on your cover defender, your colleague, one on the raider. If the cover defender goes at least 70%, 65 to 70% to the ankle hold, only then go for the dash. Only then go for the dash, or else you going for the dash alone does not make any difference. And the other eyes I was talking about, if the raider is behind your right hand, if you're a left cover, I'm just giving an example for say Govind Gurjar. He's a left cover defender, and if your right hand is just in front of the raider, then your dash is perfect. I know it's a lot of geometry and I know it's a lot of angles, but that is simple as it has been explained. अगर आपके राइट हैंड से पीछे अगर एक रेडर है, तो dash will be very very successful as Ram Kuwar runs in. See, now when he increases the pace, see what happened, Arshit. See, when he increases the pace, what happened? This is the positive result. जी हाँ, यही इसी की हम बात कर रहे थे. राम कुमार से आप यही देखना चाहते हैं. और नवीन, आपने बिल्कुल सही तरीके से सभी युवा खिलाड़ियों को समझाया है कि जब तक या तो अगर रेडर बहुत ज्यादा डीप न चले जाए, आपके राइट हैंड से पीछे न हो जाए, तो आप जाइए डैश के लिए, अन्यथा आप कॉर्नर से इंतजार कीजिए. अगर वो एंकल होल्ड के लिए जा रहे हैं तो वहां पर सपोर्ट करने के लिए और वहां पर इंश्योर करने के लिए डैश के लिए जा सकते हैं. अगर वहां पर थोड़ा सा भी ग्रिप में गलती होती है. बहुत सही नवीन. टेक अ वोट टू यू आल्सो. जिस तरह से आपका yeah, that's Ashu Malik stealing away the bonus point. Yeah, see, defense is like always two lovers walking in the park or even in the run of touch, just holding hand in hand and just walking those long walks. It is the lifelong journey with defense, and that is what the right cover and the left corner should do, and that is what the left cover and the right corner should do. They should hold hands, and that is kabaddi, as we always talk about where the name actually originated from. And it's a good comparison that's been given in by our very good friend Sohail Chandok, where he always says, that defense holds hand, and the chain that we see, that two chain, it's Kai Pidi. That's the Tamil word that is coming in. Kai Pidi is hold. So that's where the Kai Pidi came in and became as kabaddi. That's what at least reference from South and Tamil Nadu and Karnataka, Kerala will always believe. But yeah, different regions, different beliefs, but holding hand is important, no, in any language. देखिए, चाहे लैंग्वेज बदल जाए परंतु महत्व नहीं बदल सकता.
और महत्व जय भगवान का भी उतना ही रहेगा। एक बार जी हाँ, जय भगवान लगातार प्रयास कर रहे हैं और नवीन 7.5 मिनट और लगभग 16 क्या वहां पर पॉइंट की लीड रह जाएगी। अब क्या आप यहाँ से अरावली एरोज को कैसे भी वापसी करते हुआ देख रहे हैं? देखिए 15 पॉइंट की लीड है, अब 15 पॉइंट की लीड वहां पर मुर्थल मैग्नेट्स के पास है। आपने जिस तरह से वहां पर चेन का महत्व बताया वो बिल्कुल एग्री करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपने उसे बताया भी। Yeah, and see, if Kapil Gurjar understands that's it. Half of the problems are solved because Kapil Gurjar every time goes in to the dash with a solo effort of played her out in a single decision. Agreed, it is a single decision, but there has to be some coordination. Now Jai Bhagwan comes in, and somewhere Vinay Virender was confused which chain that he wants to be in. In fact, that was Umesh Pawar. Correction. Umesh Pawar was confused whether he goes in to hold Ashu Malik's hand or whether he goes in to hold Mahendra Chaudhary's. No, in fact, that was Sanjay Dul. Correction. Sanjay Dul's hand, and at the end of it, Sanjay Dul had to go back, and it's a do-or-die raid. Now, let me. There you see. There you see, holding. Come on, keeping a hand on the head does not work, Captain. जी हाँ, ये इसी की हम लगातार बात कर रहे थे। कपिल गुर्जर को तुरंत एहसास भी हुआ कि कितनी बड़ी उनसे यहाँ पर गलतियां होते हुए नजर आई है निश्चित तौर पर, और चेन की हम इसीलिए इतनी ज्यादा वहाँ पर बात कर रहे थे। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से जय भगवान जाएंगे जरूर। मनीष दुल इस बार जरूर वहां पर कॉर्नर संभालते हुए नजर आएंगे। उमेश पवार दूसरी तरफ है, चेन में मौजूद है आशु मलिक के साथ। जय भगवान की आप ये Sorry that I cut you in. Go for it. I'm sorry, I could not control my emotions. Why because it was Jai Bhagwan. आपसे जानते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और। Yes, Naveen, please. No. Just because it was Jai Bhagwan, I was really shocked. And look at that for a power from Ashu Malik. Oh my God, that is a point that has been earned big time. And I hope there is no big injury. Just a shoulder niggle. That's fine. Our physio partner UEM are there always to support, and when you stop a big team, this happens. Ashu Malik, yes. You will be fine. Don't worry, brother, because it's the upper body and it's the shoulder. Yeah, there will be a slight niggle. There should be some magic spray that will come out. That should be nice. University of Engineering and Management are physio partners, and of course, Dr. Abhishek Gupta will not be required for this niggle, but he's always there for the hospital partner alongside with us as Metro Mass is there. But then, Harshit, that struggle, Harshit, you go on and enjoy that. I was so unbelievable in my shouting that I did not control myself. No, Naveen, not an issue about that. But देखिए आपने बात की यहाँ पर भीम को पकड़ेंगे तो कुछ ना कुछ सहलाब तो वहाँ पर विपक्षी को भी सहना पड़ेगा। और बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से चट्टान अगर टकराती है तो निश्चित तौर पर चिंगारियां निकलती है, और वो चिंगारी सी झलक यहाँ पर नजर आई थी। और जिस तरह के से वहाँ पर देखिए, हमने शुरू के सर्वाइवल राउंड में भी बात की थी नवीन कि जय भगवान को अपर बॉडी से टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है, और आशु मलिक ने ये सोलो टैकल सा कर दिखाया है। देखिए वहां पर वेस्ट होल्ड किया, बैक होल्ड किया, परंतु कितना फोर्स वहां पर मौजूद होगा। और इस बारे में मैं पहले भी चर्चा करना चाहता था नवीन कि कोच की आप डेस्परेशन देखिए। मुर्थल मैग्नेट्स टॉप ऑफ द टेबल मौजूद है, परंतु उसके बावजूद दिलबाग सिंह जी की वहां पर डेस्परेशन देखिए, लगातार अपने खिलाड़ियों को कुछ न कुछ संदेश देते हुए वहां पर नजर आते हैं। इससे पता लगता है कि इनके कोच और इनकी टीम में कितनी अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है। Definitely bonding is one big factor that unites the players and the trainer very much. But I will really be very happy for the coach's intention here, because they understand that finishing in those top 3 places are so important. As Vinay Virender puts a surprise ankle hold, and Ram Kuwar has been pinned down. Now I think this is end of the road for the Aravalli Arrows. There you see Manish Dhul was very evident in going back into the chain, and he left out Vinay Virender to go in for the surprise attack from the in position, and now he can take all his time. And of course, we were just talking about the coach's intention. Finishing on top is a big deal. Now, even for the added advantage that you will be, given that extra prize money if you are finishing in 1, 2, 3. So Periyar Panthers have taken 1 place. So of course, Murthal Magnets will fight it out. So
that is nice to see. Periyar Panthers, of course, they will be in that 1-2-3. Even if they don't want to lose any game though, but even if time is going against them, and even if they lose out a couple of games, which I am seeing that they won't, but even then they'll get that one place from the 3. So it's the other 2 places now is up for the grab for the prize money to go into the challenger round. Now Umesh comes in for a do-or-die race. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा पेरियार पैंथर्स के बारे में, परंतु मैं मुर्तल मैग्नेट्स को भी वहां टॉप 3 में समाप्त करते हुए जरूर देखना चाहूंगा और शायद समाप्त करते हुए नजर भी आएंगे। इस बार जरूर अच्छा यहाँ पर डबल थाई होल्ड, डबल एंकल होल्ड के साथ वहां पर समाप्त किया महेंद्र चौधरी, जिन्होंने मुकाबले की शुरुआत में अपने टैकल्स बहुत ही ताकतवर तरीके से किए थे, उसके बाद थोड़े से ऑफ कलर नजर आए, परंतु अब फिर से और देखना होगा क्या 3.5 मिनट के समय में क्या जो वापसी के दरवाजे हैं उसकी चाबी ले पाएगी। हालांकि मुर्तल मैग्नेट्स ने ताला लगा दिया है और चाबी फेंक दी है दूर जंगल में। क्या गंगाराम उस चाबी को ढूंढ पाएंगे और वापसी के दरवाजे फिर से खोल पाएंगे? ये भी शायद एक क्या 2 पॉइंटर रेड है या सिंगल पॉइंटर रेड है, देखना होगा। 10 and 11. Oh, 10 and 11. That's what it is. Manish Dhul and Vinay Virender, both of them taken out. This is why I like Gangaram when he raids. Manish Dhul is actually appealing, and we'll have to be very, very clear. The appeal should be request. It should not be an argument. The toe touch was tried. That was not been given. The kick, I guess, yes, he's got the kick on Manish Dhul. That is why Gangaram was so confident. But yeah, that is what the referee is also saying. Okay, your appealing is fine, but it should be a request, or it should be a normal appeal. It should not be getting into an argument. That is what we want from all the top players. The toe touch was missed, and then the pace of Gangaram could not be gauged in by Vinay Virender, and very, very important 2 points. Now even if Ashim Malik goes back with empty red, it's fine, Harshit. I'm seeing this 3 minutes time that is left in the game for Aravalli Arrows not to win this game, at least to get that 1 point. And for that, the all out is very important. Thank you so much, Kapil Gurjar. 77 Whatever I and 2 talk, points. he Murthal बस Magnet. वो आके उस पे पानी फेर जाता है। मतलब मैंने रन ऑफ कट से लेके हाथ में हाथ मिलाने के चलने की बात भी की, और अभी देखो मैं ऑल आउट की भी बात कर रहा हूँ। दोनों बार मेरे बात पे मतलब पानी फेर दिया अभी कपिल गुर्जर ने। बताओ मैं क्या करूं? अभी आप बोलोगे कि नहीं वो जयपुर के पुलिस के टीम में खेलते हैं, मैं बात ही नहीं कर सकता उनके बारे में अभी ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल सही तरह से आप एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग था एक बड़े पॉपुलर सीरियल से सही पकड़े हैं, मैं वही कहना चाहूंगा बस। पर चलिए एक बार फिर से देखिए, मैं इसी यहाँ पर लगातार बात कर रहा था नवीन कि एक बार फिर से मुर्थल मैग्नेट्स क्यों वो टॉप ऑफ द टेबल मौजूद है। देखिए हमने बात की थी कि आशिम मलिक जा सकते हैं, एक एम्प्टी रेड कर आ सकते हैं, परंतु उनका वो इंटेंट, वो हमेशा वो पॉजिटिव इंटेंट जो रहता है। और अब शायद वहां पर जय भगवान कह रहे हैं कि चलिए आप लोग जाइए खेलिए, जरूर शायद सब्स्टिट्यूट वहां पर जय भगवान हुए हैं कि उन्होंने प्रयास किया है कि चलिए अब युवा रेडर को थोड़ा मौका मिले। Yeah, no point, no point. Because Jay Bhagwan needs that freshness for the next match, and just to be injury free, it's a good decision, as the bench will also get some experience, and they have inducted a young lad to just go and have some mat experience, and Ashim Malik can just take all the time in the world. See, I wouldn't have been very happy if Jay Bhagwan would have been there on the mat and tried something, but then goes back empty-handed. But then this decision is somewhere very nice because he's injury free. He's injury free. They know that they will not win this match. They will not even get that 1 point. And that's why Dipanshu Yadav has been inducted in. और दीपांशु यादव ने कोशिश जरूर की थी, परंतु एक आसानी के साथ कृष्ण धुल ने कहा कि आई एम द मैन इन फॉर्म। लाजवाब डिफेंस यहां पर करते हुए नजर आ रहे कृष्ण धुल, एक बहुत अच्छा प्रदर्शन, एक बार फिर से बहुत अच्छा ब्लॉक प्लस होल्ड, दोनों यहां पर आपको स्किल्स नजर आई। और नवीन मैं बताना चाहूंगा आपको कि दीपांशु यादव निश्चित तौर पर हमने बात की बहुत ज्यादा हेल्दी रेडर नहीं है, पर आज हमें ऐसा एक रेडर गोपाल नजर आए, गोपाल सिंह वहां पर नजर आए, शायद मराठा मावल से थे, उन्होंने भी ज्यादा हेल्दी नहीं थे, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने स्पीड दर्शाई, तो ये सबसे बड़ी स्किल है नवीन कि आप स्पीडी होना जरूरी है। वेट सेकेंडरी मैटर है, हेल्दी होना सेकेंडरी मैटर है बहुत ज्यादा, परंतु वो स्फूर्ति होना आपके पैरों में वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस प्रकार से उमेश पवार में नजर आती है आपको वो। Yeah, actually, see, I will, just on a lighter note, tell you that, whatever you see, I'll give you an example, because who looks more, more dangerous as a villain on screen? Of course, it's our Nawaz Bhai,
and वो बोलेंगे कि बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लूंगा. And that is what Raiders have to do. It's not on how they look. It's about the speed, it's about the fitness on the mat, and it's about the momentum. When you have that speed in the race, you don't have to worry about how you look. Absolutely. बिल्कुल क्या बात है नवीन, क्या डायलॉग के साथ यहाँ पर आपने इसे समझाया है. Very brightly. Yeah, and Umesh Pawar now will be surrendering himself, I think, in the do-or-die raid. Yeah, thank you so much. He goes back, does not try too much there. And I guess that's the end of the match, and it's a big win. Once again, Murthal Magnets winning both the matches in the booster round against the Aravalli Arrows. So it's the round-robin victory for Murthal Magnets against the Aravalli Arrows. They make it 2-0 on that round-robin way in the booster round. So it's a convincing victory. So Aravalli Arrows have a lot of things thinking to do, and it's not just Jay Bhagwan who will save you. It's not just Gangaram. Kapil Gurjar has to think about the game. And if you really ask me, Harshit, of course, given all the skills and talent that Kapil Gurjar has, in the last 2-3 matches, tell me if he scored more than 3 tackle points. I do not remember. 3, or I guess it's maximum 3 points he might have scored, but not more than 3 points as a defender is what I'm guessing, and that has a huge impact on the defense of the whole team, and the captain himself is so much lacking in form. जी हाँ बिल्कुल, और कपिल गुर्जर के फॉर्म पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि वो इस प्रकार के डिफेंडर हैं और उनकी स्किल्स की आपने बात की कि उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है. उनका प्रदर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, और उमेश पवार का प्रदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण यहाँ पर मुरथल मैग्नेट्स के लिए. जिस प्रकार से प्रदर्शन विनय वीरेंद्र हो, उमेश पवार हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, कृष्ण दुल की आप बात कर लीजिए, जिस तरह से प्रदर्शन मुरथल मैग्नेट्स लगातार करते हुए नजर आ रहा है, टॉप ऑफ द टेबल बिल्कुल वो मौजूद है और बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने प्रदर्शन को जारी रख रहे हैं. जरूर जय भगवान के लिए आप थोड़ा सा हार्श फील करेंगे. ये थी वो रेड जिसमें नवीन सच में हम सभी बहुत चौंके रह गए थे आशु मलिक के पावरफुल डिफेंस से. If that raid would have been successful for Jay Bhagwan, the results would have been different. But all credits to Mahendra Chaudhary, who's done well. Lokesh Gosalia has done well. Of course, Kapil Gurjar on the defense really need to work on his skills and come back into form very quickly for the Aravalli Arrows. But Mahendra Chaudhary and Lokesh Gosalia today have impressed. No doubt about that at all. Because Mahendra Chaudhary is like that football goalkeeper who always catches the raider in mid-air and tackles them down. And this is the story. The raid points are more than what you really want to be at that level. 28 only for Aravalli Arrows, and the raid points itself is the total score of Aravalli Arrows. Murthal Magnets, see, 28 raid points, and that itself is enough for Aravalli Arrows is 28. So that's the story of this match. But the next match is a big one, and just before that, we're just looking at the points table where Murthal Magnets are comfortably there on top. But it is not a big lead. It's just 0.22. That's all I should say. Points per match. If you look at that, Periyar Panthers is on 5 and Murthal Magnets is just 0.22 ahead of them. And that is not a big lead. That's not a big lead. Periyar Panthers will say, "Kabhi kabhi lagta hai Apunich Bap," and they will come back in a big way. क्या बात है नवीन. पर चलिए अगले मुकाबले की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. टडोबा टाइगर्स वर्सेस एमपी हीरोज. नवीन, मैं आपको कॉल करने वाला हूँ, थोड़े से बॉलीवुड मूवीज के बारे में और जानूंगा मैं आपसे इसके बाद. No, man, I'm not the guy. But yeah, see you soon at 8 p.m. on Fan Code. Tadova Tigers will be taking on the Humpy Heroes. I am Naveen Shori. Along with me was Harshit Sharma. See you soon.